Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is to appear before the Enforcement Directorate at its headquarters today at around 11 a.m. in the alleged liquor policy scam probe. This comes, of course, after Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Aam Aadmi Party Member of Parliament Sanjay Singh were arrested in the same case. The probe agency has earlier told the Supreme Court that it was contemplating summoning AAP's national convener to appear before it in connection with the ongoing probe in the liquor policy irregularities. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was earlier questioned by the CBI in April. Meanwhile, Kejriwal's summon has, of course, drawn sharp criticism from Aam Aadmi Party politicians as well as other opposition leaders. The Aam Aadmi Party is, of course, a part of the INDIA bloc, and several members of this bloc have, of course, condemned the summons and said that it is a quote-unquote further proof of their stand that central agencies are being misused by the BJP-led government. Before I move on, joining me live is my colleague Brian Thomas. Brian, let's in fact go to you. What can you tell our viewers? What can we expect will take place today? Yes, the Enforcement Directorate has summoned the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal questioning in a money laundering case related to the excise policy. The agency has also issued a summon under the Prevention of Money Laundering Act, that is the PMLA, scheduling the recording of his statement in Delhi. We will meet the investigating officer today at 11 a.m. and this marks also Arvind Kejriwal's first summon by the ED following previous questioning that happened for 9 hours by the CBI, and the ED has also cited Kejriwal's involvement in its charge sheet, asserting that he was in contact with the Aam Aadmi leader concerning the formulation and execution of the defunct Delhi excise policy for 2021-2022. In the recent development, also the Supreme Court has definitely rejected 2 bail petitions from former Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia. And these cases also involve corruption and money laundering allegations related to the alleged Delhi excise policy, and the court also indicated a provisional transfer of rupees 338 crore in the matter, and Sisodia was arrested also on February 2023, and now following the establishment of the Indian INDIA alliance, Raghav Chadha also yesterday in the press conference said that the BJP appears to be alarmed, and he says that they have received information from their sources that they have devised a strategy to focus on prominent leaders within the INDIA alliance. And the initial step also, he said in the press conference, will involve the arrest of Chief Minister. And even when the party leader Saurabh Bhardwaj also commented on the situation, stating that the party would continue its work also even if Arvind Kejriwal or other members were taken into custody. And he emphasized that the party's commitment to providing free education, electricity, water will keep on happening. And he also said that it will, if the CM gets arrested by the ED or if there is a judicial custody happening, that it will be decided by the senior leaders of the Aam Aadmi Party. But yes, he also said that Arvind Kejriwal will not let that happen. And during the press conference also that happened yesterday, he said that approximately 95% of cases filed by these investigative agencies have targeted opposition leaders. The INDA blocks have been targeted. But yes, it will be interesting to see what happens, what transpires today at 11 a.m. when he will be brought to the investigating officer, where Arvind Kejriwal will be brought because he got his summon today at 11 a.m. He will be appearing before the investigating officer. So yes, it will be interesting to see what transpires at 11 a.m. Yes, indeed. Brian, stay on with us because you have talked about Raghav Chadha in particular and what he has to say. Of course, he is one of the prominent political leaders who has in fact reacted to the ED summons. There have been other leaders, including Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party, as well as Mamata Banerjee and Nityanand Rai, who have showcased their reactions. Let's play out those sound bites. Let's look at their reactions to take a better understanding of what the leaders are maintaining. बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े
शीर्ष नेता है अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया गया। पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। बात बाकी तो आपको पता है, अरविंद को भी नोटिस भेजा, 5-6 एमपी को ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर लिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे, क्या सोचेगा हमारा देश के लिए। हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है, इट्स अ मदरलैंड। कानून अपने हिसाब से काम करती है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो भी हो, या स्वतंत्र इकाई है। जो भ्रष्टाचार अत्याचार होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ कानून का हाथ पहुँचेगा ही। कानून के हाथ पहुँचने का यह सब संस्थाएं माध्यम है। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, घोटाला में लिप्त होंगे, तो कानून क्या उनकी रक्षा करेगी या वहां तक पहुंचकर कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे, तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती भी है कि सबको जेल में डाल दिया जाए, दिल्ली के लोगों के काम बंद हो जाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएं, सब ठप हो जाएं। यही चाहती है केंद्र सरकार, बट ये अरविंद केजरीवाल जी होने नहीं देंगे। काम लोगों के चलते रहेंगे। There, of course, we've heard the bigwigs, of course, state their perspective and their party's position. But meanwhile, Brian, still with me on the broadcast. Brian, of course, last time around there was a high-octane drama that had taken place. But before the storm, there was a calm, an uneasy calm, of course. So can you tell us what CM Kejriwal is expected to do before he appears before the ED at around 11 a.m.? We are getting to know that all the opposition party has condemned the Bharatiya Janata Party, saying that they were targeting the INDIA bloc and they were targeting the members of the INDIA bloc. And yes, today he is supposed to come in front of the investigating officer at 11 a.m. And there is definitely a calm before the storm hits. He is. What we are getting to know that there is a lot of movement outside his residence also, and also right now also I mean there will be a major breakthrough that will happen at 11 a.m. when they'll be he will be appearing in front of the investigating officer, because the Supreme Court also has recently rejected 2 bail petitions from former Deputy Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia, and these cases also involve corruption and money laundering allegations. And Raghav Chadha also recently yesterday said clearly that they are getting bullied and they are just getting targeted by the not just them but the prominent leaders within the INDIA alliance is getting targeted by the BJP, and they are alarmed and they will do everything that needs to be done. And even Saurabh Bhargava clearly said that the senior leaders of the Aam Aadmi Party will take the decision of what can be done if Arvind Kejriwal gets arrested. But he also says clearly that Arvind Kejriwal will not let any of this happen. So we need to wait to understand what transpires at 11 a.m. today. Indeed, and Brian, can we expect Aam Aadmi Party workers to take to the streets? There can be a possibility, yes. There can be a major possibility where they might hit out to the street to protest against their senior leader being arrested. There can be a possibility where they stand outside the ED's office or Arvind Kejriwal's office or Aam Aadmi Party's office to protest. Earlier also there was a lot of protest that was happening, but yes, there is a possibility, there is a likely to happen where the party members, the party workers can come out in the street, hit the street to protest against their senior leader being arrested.
Indeed, and even as we're talking about political reactions, and Raghav Chadha has also in fact raked up Congress during his press conference yesterday, but bigwigs, the top brass of Congress, has largely remained mum till now. Can you explain to our viewers a little more about this? The Congress has definitely not spoken much about the thing that is happening, the entire fiasco is happening. But yes, other leaders have definitely spoken, being very vocal about it, be it Mamata Banerjee, be it other leaders of the Aam Aadmi Party. But yes, Congress has taken mum about it or taken silence about it. But yes, we need to wait for what they speak or what they have to speak about this ongoing fiasco that is happening. Indeed, and let's in fact shift our focus to the epicenter of what in fact we are going to be covering throughout the day. My colleague Naveen Nishant is joining us live from Arvind Kejriwal's residence. Naveen, you are on ground. Can you show us how it is like at the moment? What is the atmosphere like at the Delhi Chief Minister's residence? बिल्कुल, देखिए बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मौजूद हैं और सामने आपको मुख्यमंत्री का घर दिखा दें। ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये सरकारी आवास है और आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यानी जो क्योंकि आज मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए जाना है, तो उससे लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं उन्हें भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को तकरीबन 11 बजे के करीब ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाना है और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं, तो उसे लेकर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। यानी जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में जो है वो ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब किसी जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले आपको बता दें कि 16 अप्रैल को सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था पूछताछ में शामिल होने के लिए। उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और मुख्यमंत्री ने खुद बताया था कि 56 से 58 सवाल उनसे पूछे गए थे। उसके बाद अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया है और आज अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। उससे पहले मुख्यमंत्री का जो घर है, यानी अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी घर है, उसके आसपास तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले, यानी जब मुख्यमंत्री यहाँ से ईडी ऑफिस के निकले तो किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। क्योंकि आमतौर पर जब बड़ा नेता अपने घर से पूछताछ के लिए निकलता है तो फिर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और उसके बाद कई तरह की जो सड़क पे जाम की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी के समय यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो ईडी है उस कार्यालय के समक्ष जाएंगे। जी, आपने बोला कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुँचने वाले हैं। करीबन किस टाइम पे पहुँचेंगे, आपको इसका कोई अंदाज़ा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बता दें कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो 10 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो दोनों नेता हैं, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ से फिर एक साथ ईडी दफ्तर की तरफ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब 16 अप्रैल को जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था तो उस समय भी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ थे। दोनों नेता 7 तक सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और फिर वहां पर बैठ के भगवंत मान ने वहां पर मुख्यमंत्री के लिए प्रदर्शन भी किया था। और जब तक मुख्यमंत्री से पूछताछ होती रही तब तक भगवंत मान सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही मौजूद थे। फिर जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकले तो फिर वहां से भगवंत मान उनके साथ उनके घर तक पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी समझना होगा कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के जो तमाम मंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और उनके साथ ईडी मुख्यालय तक जाएंगे। जी, एंड ये क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट्स पे आएंगे, वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या आज?
देखिए, अब तक के अनुभव की बात करें तो जब भी किसी बड़े नेता की पेशी होती है या फिर वो सीबीआई मुख्यालय जाते हैं, ईडी मुख्यालय जाते हैं पूछताछ के लिए, तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं। तो ऐसे में आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे तो जो तमाम उनके समर्थक हैं, जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें चाहते हैं, वो निश्चित रूप से सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि जब 16 अप्रैल को भी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो दिल्ली के कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम किया था, सड़क जाम की थी। कश्मीरी गेट हो, चाहे वो तमाम इलाके हों, पीड़ागढ़ी का इलाका हो, इन तमाम इलाकों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम किया था, जिससे ट्रैफिक भी बहुत देर तक दिल्ली में बाधित रहा था। तो दिल्ली पुलिस ने उसकी भी तैयारी की है। जहां जहां पुलिस को लगता है कि यहाँ कार्यकर्ता जाम कर सकते हैं, वहां पर एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। जी, और नवीन, अभी जानकारी आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम राजकुमार आनंद, जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है दिल्ली के गवर्नमेंट में, वो अब उनके घर में पहुंच चुके हैं। ये थोड़े ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उनके घर पहुंची है और जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस मामले को लेकर जांच चल रही है, क्योंकि राजकुमार जो आनंद हैं वो उन्होंने नवंबर में ही मंत्री पद संभाला है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस मामले को लेकर वहां पर जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि राजकुमार आनंद के घर अभी के समय जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और राजकुमार आनंद का जो सरकारी आवास है उसके अलावा कुछ अन्य ठिकानों पर भी अभी के समय जो ईडी है वो रेड कर रही है। जी, and last question to you, Naveen, before I free you. There are in fact visuals that we have accessed for our viewers. ये हम लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं राजकुमार आनंद के घर से कि वहाँ ईडी की टीम भी पहुँच गई है। जो सीएम केजरीवाल है उनका जब वो अपने रेजिडेंस से निकलेंगे उससे पहले वो क्या करेंगे? मीटिंग के अलावा कुछ और करेंगे? देखिए, आमतौर पर जो रहे हैं वो मुख्यमंत्री पहले अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं, यानी मदर और जो फादर हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करते हैं, जो रूटीन मीटिंग होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलते हैं और बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे तो हो सकता है कि वो राजघाट भी जाएं, क्योंकि जब सीबीआई की पूछताछ हो रही थी तो मुख्यमंत्री जब यहां से निकले थे तो उनका काफिला सीधे राजघाट पहुंचा था और वहां श्रद्धांजलि देने के बाद महात्मा गांधी को सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे। तो बताइए भी जा रहा है कि आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और जब मुख्यमंत्री यहां से निकले तो वो हो सकता है कि राजघाट जाएं और फिर वहां से ईडी मुख्यालय जाएं। All right, Naveen, with that I would like to thank you for joining us on the broadcast. But as my colleagues Naveen and Brian were earlier stating, of course, there are developments that we have to keep an eye out for throughout the day. But in the meantime, there were, of course, political reactions that were also coming in. Raghav Chadha, Nityanand Rai, Mamta Banerjee, Saurabh Bharadwaj have, of course, all reacted to the summons by the Enforcement Directorate to अरविंद केजरीवाल। बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। बात बाकी तो आपको पता है, अरविंद को भी नोटिस भेजा, 5-6 एमपी को ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर लिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे, क्या सोचेगा हमारा देश के लिए। हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है, इट्स अ मदरलैंड। कानून अपने हिसाब से काम करती है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो भी हो, या स्वतंत्र इकाई है।
जो भ्रष्टाचार अत्याचार होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ कानून का हाथ पहुँचेगा ही। कानून के हाथ पहुँचने का यह सब संस्थाएं माध्यम है। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, घोटाला में लिप्त होंगे, तो कानून क्या उनकी रक्षा करेगी या वहाँ तक पहुँचकर कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे, तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती भी है कि सबको जेल में डाल दिया जाए, दिल्ली के लोगों के काम बंद हो जाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएं, सब ठप हो जाएं। यही चाहती है केंद्र सरकार, बट ये अरविंद केजरीवाल जी होने नहीं देंगे। काम लोगों के चलते रहेंगे। There, of course, we've heard bigwigs from across political spectrum react as far as this development is concerned. Of course, earlier, Manish Sisodia was, of course, arrested. This had taken place on February 26, 2023. The CBI had arrested former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Meanwhile, of course, March 9th, ED has arrested Sisodia. But of course, also joining us on the broadcast this morning is Mr. Harish Khurana, a senior leader of the Bharatiya Janata Party. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको सम्मन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है। Also joining us on the broadcast this morning is Mr. Harish Khurana, Bharatiya Janata Party leader. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. The ED is, of course, expected to question Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today. How do you react to all of these developments? What can we expect today? See, law is taking their own course, and due to that, ED has summoned Arvind Kejriwal. A lot of answers has to be given by the Arvind Kejriwal, and especially after Supreme Court observations regarding 338 crore rupees money trail which has been found. A lot of answers has to be given by Arvind Kejriwal, because we all know that the mastermind of this whole scam and the kingpin is Arvind Kejriwal, and without Arvind Kejriwal, it is not. We cannot believe that in the Aam Aadmi Party government. Something will be happening without the knowledge of Arvind Kejriwal. C. Arvind, who is the Manish Sisodia personal secretary, also stated in his statement that in the presence of Arvind Kejriwal and in the house of Arvind Kejriwal, our GM meetings draft minutes has been handed over to him, where 5% to 12% commission was stated in that. So these answers has to be given by the Arvind Kejriwal, and law is taking their own course. But I don't understand why Aam Aadmi Party leaders like Raghav Chadha and Saurabh Bhardwaj and Atishi is to saying it's better the politics is going on. They're doing a bichara politics. I don't know why. I mean, Baba, let the law their own course. Let a lot of answer has to be given. Let the Arvind Kejriwal answer it. If it depends on Arvind ED whether they are satisfied or not, it has to depend on the ED and Arvind Kejriwal. Why we are doing a bichara politics, I don't understand. Sir, one very important observation that can be made is the fact that the Congress top brass especially has remained mum through all of the developments that are taking place. Is this indicative of some sort of cracks within the India bloc? See, we should understand Delhi local leadership of Congress is raising this corruption issue since quite long. And now I think it's impractical also, and what will they will say to the public of Delhi that on one hand they are supporting Arvind Kejriwal through Indi alliance, on the other hand they are opposing on the streets of Delhi, opposing this liquor scam. So I mean, Congress has to see their own stand.
But the actual fact is, today whole country is seeing that Arvind Kejriwal did a scam, and this is not, I'm not saying it. Courts from lower court to high court is not granting the bails to the many leaders like Manish Sisodia, Sanjay Singh, and Vijay Nair, and also they are getting the observations that prima facie this corruption has happened. So, I mean, a lot of answer has to be given by Arvind Kejriwal. It cannot be happen that Manish Sisodia is in jail, but the kingpin and the mastermind is outside the jail and not giving the answers. All right, sir. With that, I would like to thank you for joining us on the broadcast today morning, presenting your perspectives and that of the Bharatiya Janata Party on NewsX. Of course, these are developments that we are tracking for all our viewers on the broadcast. As you can see what we are flashing on our screens, the ED is of course expected to question Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. This will take place at around 11 a.m. today. But of course, we are tracking these developments for our viewers. But also joining us on the broadcast is Mr. Anuj Atre, who is the Congress spokesperson. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. Of course, Delhi CM Arvind Kejriwal has been summoned by the Enforcement Directorate today. What is your reaction to this development? It is a course of investigation. And no doubt about it that this liquor scam has made लोगों का इसमें बहुत सा पैसा जो करप्शन में गया है, जिस तरह से इसमें चार्जेस लगे हैं, जिस तरह से एविडेंसेस सामने हैं, जिस तरह से रिवीलिंग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एक स्ट्रिक्ट लाइन आई थी अभी लास्ट हियरिंग में कि जब पैसा जो है सारा जो ब्राइब का जो पैसा जिसको बोला गया है वो आम आदमी पार्टी के लिए यूज किया गया है, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाया गया। और केजरीवाल जी बीइंग द हेड ऑफ पार्टी एंड बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाने में ही मेन सब कुछ रहा था, और इसलिए इनसे क्वेश्चनिंग होनी लाजमी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इतना लंबा इसको चीज़ों को ड्रैग किया जा रहा है, जो जिस तरह से बातें आ रही हैं सामने, पहले भी आ रही थी कि कहीं इलेक्शन के लिए इस चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, पॉलिटिकली इसको जो है बीजेपी की तरफ से इस तरह से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि पॉलिटिकली इसमें गेन किया जाए कहीं ना कहीं इसको शो करके। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर करप्शन है तो उसमें इमीडिएटली जो भी एक्शन होना चाहिए। इतना लंबा पीरियड अगर एजेंसीज केवल क्वेश्चनिंग के लिए लगाएंगे, मोर देन अ ईयर हो गया इसमें इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि जैसे जैसे इसको 2024 के इलेक्शंस के नजदीक लेकर के जाना है और उसको इलेक्शन में गेन करना है, वो चीजें भी ठीक नहीं है। Sir, Alliance bloc partner, the INDIA bloc partner, TMC's Supremo Mamata Banerjee has also commented on this issue. She stated that the Bharatiya Janata Party is trying to gag the voice of all opposition parties. This of course comes as even Congress has earlier maintained that central agencies are being misused. Do you think that is the case in this particular instance? सी ऑन द लार्जर वे अगर हम देखें, जब से ये आई है गवर्नमेंट बीजेपी की, नो डाउट अबाउट इट, जो ममता जी ने कहा है कि टोटल अपोजिशन के लीडर्स को ही टारगेट करा है इन्होंने। जितने भी केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और भी जो इनकी डिविजन्स बन चुकी हैं बीजेपी की इशारे पे जो काम कर रही है, 100% जो है अपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट करके किया जा रहा है। और उन लीडर्स के लिए इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है जो इनके प्रेशर में आकर के बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो करप्ट नहीं रहते हैं। चाहे हेमंत बिस्व शर्मा को ले लीजिए, नारायण राणे को ले लीजिए, मुकुल को ले लीजिए, मुकुल अपने बंगाल से आते हैं इनके, और भी तमाम लीडर्स, बहुत लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है। चाहे इनके बीजेपी के खुद के लीडर्स ले लीजिए, येदियुरप्पा जी को ले लीजिए, इतने जितने भी लीडर्स हैं, रेड्डी ब्रदर्स को ले लीजिए, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और उनके ऊपर बहुत बड़े करप्शन के चार्जेस होते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी का नाम आ जाता है उनके साथ, तो वो सब चार्जेस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यही केस इसमें हो रहा है कि या तो बीजेपी में आ जाओ, जो इनकी अगर आपने अपने आप को क्लीन चिट दिलवानी है और आपने करप्शन चार्जेस से फ्री होना है, नहीं होना है तो फिर आप एजेंसीज का जो है इनके इन्वेस्टिगेशन फेस करो, जेल फेस करो।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.